to my season 2 of O Zindagi talk show, where today we have a very special guest that is Dr. Neelam Parwani. Hi, Dr. Neelam, how are you doing? I'm good, Preeti. How are you doing? All good. So, आप कहाँ जा रहे हैं? You know, I can see that you are in car. So, are you traveling I'm somewhere? enjoying the potholes of Gurgaon right now. Wonderful. So, Neelamji, all said because that is my pleasure to, interview you, know more about nature's grace, and know more closely what you do, how you do, and why you do. All set? Yep, all set. Let's start. Great. So, before we start, I want to thank all the people who will be watching us on YouTube. Dr. Neelam Parwani, she is the founder of Nature's Grace, and apart from that, she does so many things that once you know about her, you'll be coming to know about it. And this is my privilege to take her interview because इनको जानना मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा ऑल टुगेदर क्योंकि ये एक वो वाली हस्ती हैं जो बेशक पेज 3 पे आपको ना दिख रही हूँ but she herself is a celebrity. So Neelam ji, I want to know more about Dr. Neelam Parwan. Okay. So let's start with why did I started this? I am from a corporate world and IHM graduate from IHM Mumbai. And before getting into the spiritual field, I have worked in hospitality, BPO, and education industry. Now, what made me move into this field is something they always say there's always a personal reason when you move into this direction. हर किसी के पास कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड यू मूव इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. आई वाज वर्किंग इन मुंबई इन आईटीएम मुंबई एज अ रीजनल हेड for the MD education division. And one day, just when I was getting out of the rickshaw, suddenly I had a back pain. Okay. And it was so severe at that time that for the next 1 month, I was on bed. Oh, And physiotherapy, hot water fermentation, ये वो सब कुछ कर करा के after 2 months I was back on my feet. But that only lasted for one more month. उसके बाद I was again back on the bed. So that cycle continued for a year. So in that 1 year I had to leave my job. Everything went on a hold क्योंकि जब आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे तो आगे क्या करोगे. Then from Mumbai, I moved back to Jaipur, which was my hometown. Again, I started my profession. I became a project head for another division. I opened 7 preschools all over Rajasthan with Sanjeevani kids. और वहाँ पे भी यही on and off होता था. I had started living with pain, which I was kind of not liking. You show any doctor, they only have two resolutions. या तो आप सर्जरी करवा लो या आप फिजियोथेरेपी ले लो. सर्जरी मुझे करानी नहीं थी, फिजियोथेरेपी करा करा के मैं बोर हो गई थी. तो आई ऑलवेज यूज टू प्रे गिव मी अ सोल्यूशन जहाँ पे ना मुझे कोई मेडिसिन लेनी पड़े और ना ही मुझे इस पेन के साथ जीना पड़े. तो वो जो wonderful. दर्द में निकली हुई जो आवाज होती है ना वो शायद ऊपर वाला बहुत जल्दी सुन लेता है क्योंकि वो प्योर इमोशन होता है आपका. तो वन डे वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड मी कि आप रेकी क्यों नहीं ट्राई करते. एंड एट दैट टाइम आई वाज जीरो विद द स्पिरिचुअलिटी. ओके, रेकी तो मैंने सुना भी नहीं था क्या होता है. I said, ठीक है, when I have tried so many things, it's not working, let me give it a try. So I went and met her Reiki teacher, but I was kind of not comfortable. मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है कि आप हीलिंग दोगे और ये ठीक हो जाएगा और ये सब, और मैं भाग के वापस आ गई. मतलब नहीं, this is not my cup of tea. And I still remember the next day was शिवरात्रि, तो हम लोगों की छुट्टी थी. And my teacher told me very clearly, अगर आपको शुरू कराना है तो रेकी में एक पहली प्रेयर होती है जिसको हम शक्ति पाठ कहते हैं, वो आप करवाने आ जाना कल 12 बजे से पहले. एंड आई वॉज थिंकिंग इन माई हार्ट, कल तो क्या, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी. मुझे ये करना ही नहीं है. और सारी रात आई वॉज जगलिंग 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 एंड माई इनर वॉइस वाज सेइंग कि जब सब कुछ करके देख लिया तो ये करने में क्या बुराई है, let's try this also. And finally, I was there before 12 o'clock getting my Shakti Path done on the auspicious days of Shivratri. And that's from where my spiritual journey started. It Wonderful. took me a year to understand the complete concept of Reiki. It took me a year to build my faith. But in that 1 year, with the help of Reiki and Sujok, I was completely fine. And that was like 10 years back. और तब मुझे मतलब एक वो लॉजिकल कॉर्पोरेट माइंड के अंदर वो जो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का बीज पड़ गया. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. आई एम हियर विद यू टॉकिंग अबाउट इट.
वाह, आपने बोला यू वर नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो अगर मैं अपने आप को देखूं तो आई एम सेम। मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है। मुझे अपने हम्म। बैक पेन का कोई इलाज, फिजियोथेरेपी ठीक है क्योंकि उसमें कोई दवाई नहीं खानी है। बट स्पिरिचुअल से मैं बहुत दूर भागती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। I बट आई was थिंक thinking the same initially that this is not my cup of tea. That's why the course which people take 1 or 2 months to learn, I took 1 year to learn that pretty. Imagine such वंडरफुल, a bad student I was कि मुझे 1 साल लगा उस चीज को बिलीव करने में कि हाँ ये वर्क कर रहा है मेरे लिए। वंडरफुल। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, वही होता है कि कैसे इसमें घुसे, बिकॉज आप सही बोल रहे हो कि वो एक पॉइंट शायद आएगा, वो मेरी लाइफ में भी, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बिकॉज लोग हार गए हैं, मेरे साथ भी मेडिटेशन ट्राई कर लिया, आई कुडंट डू इट। मैं या तो सो जाती हूँ या मैं आंखें खोल के इधर उधर देख रही होती हूँ कि लोग आंखें बंद करके कर क्या रहे हैं, तो वो मेरा कनेक्ट कभी बन ही नहीं पा रहा है। सी तो मेडिटेशन को लेके भी प्रीति देयर इज अ मिथ। लोगों को लगता है जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। इट्स हाँ, नॉट बट लाइक आई दैट। थिंक बहुत कुछ चल रहा होता है तब भी। हाँ, उस वक्त जो ख्याल आ रहे होते हैं those are the patterns that you have to observe because that thoughts tells you are you a positive thinker, are you a negative thinker, what all things right now are affecting in your life, क्योंकि जो major thought process है वो उसी topic से related होता है जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। So meditation is a time to get aware of your own consciousness, your own blocks and your own thoughts. और नींद आ जाती है अगर मेडिटेशन में तो नथिंग लाइक दैट, दैट इज अ ब्लेसिंग। दैट मीन्स यू हैव गॉट इनटू ट्रांस फेज एंड योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स। तो रियली, ये मतलब आप शायद पहले हो जो मुझे ये बोल रहा है, बिकॉज एवरीबडी टोल्ड मी नहीं यार तुम मेडिटेट कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज दे ऑलवेज से कि मेडिटेशन मीन्स यहाँ पर यू कैन गेट नहीं, कनेक्टेड। मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ कि मैं यहीं पे फोकस करूँ और मेरे दिमाग में कोई थॉट ना हो। इनफैक्ट फॉर मी मेडिटेशन इज माय अवेयरनेस टाइम व्हिच टेल्स मी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और कहाँ मुझे फोकस करना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मुझे थॉट्स ना आए हों। और मैं भी बहुत बार वंडरफुल। मेडिटेशन करते करते सो जाती हूँ, तो इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी जनरल। वाओ, मतलब आप शायद पहले हो 100 लोगों में से जो मुझे कह रहा है कि आई एम ओके, आई एम नॉर्मल। यू आर नॉर्मल, एवरीबडी इज नॉर्मल। नहीं बिकॉज मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो कोई नहीं कर सकता। मेडिटेशन का तो मतलब ही ये है कि यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। ऊपर वाले को वंडरफुल। तुम बाद में जानेंगे, पहले अपने आप को तो जान ले। तो अगर आप में से कोई भी मेरे जैसा है, मतलब कि मेडिटेशन का उनके लिए मतलब है कि भाई कहीं और से कनेक्ट होना, तो मेडिटेशन इज, अगर आपको नींद आ गई दैट्स द बेस्ट पार्ट एज पर डॉक्टर नीलम परवानी। और अगर आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं जो हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, देन नथिंग लाइक दैट। सो तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि देखो अब आपके दिमाग में जब थोड़ी भी शांति मिलती है तो किस तरीके के थॉट्स आते हैं। हम सब बहुत इजीली बोल देते हैं आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मेडिटेशन इज द टाइम टू फिगर आउट आर यू एक्चुअली पॉजिटिव, डू वेरी यू एक्चुअली थिंक वेरी पॉजिटिव ऑल द टाइम। और जो मेजर ब्लॉक्स हैं आपके लाइफ के वो हमेशा मेडिटेशन के टाइम में वो थॉट्स आपके या, पास बार बार आएंगे। सो दैट्स द प्लेस वेयर यू हैव टू वर्क। तो व्हाई डू पीपल देन से कि व्हेन यू आर मेडिटेटिंग सब कुछ भूल जाओ? सब कुछ तो आप भूल ही नहीं सकते हो। सब कुछ भूलना है तो फिर हिमालय पे जाके बैठो, कंदमूल खाओ, शुद्ध वंडरफुल। हवा पानी है वहां पे। वही एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाओगे। इफ यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग। So the वंडरफुल। first rule which we teach when I teach somebody Reiki, the first thing which I tell them is Reiki is a way of living your life with ease and happiness in the current situations. ये कहीं नहीं लिखा कि रेकी सीखने के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप बहुत इजीली उससे निकल जाओ। तो वंडरफुल। प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी तो बिकॉज वी आर रेकी ह्यूमन। रेकी के साथ आप एक और वर्ड यूज कर रहे हो, एस से, सुजोग। सुजोग सुजोग। इज अ कोरियन एक्सप्रेशन थेरेपी। ओके, सो व्हाट्स दैट? So in normal acupressure, what happens? You have your energy points all through your body from your head to toe. तो अगर आपको सर में दर्द होगा तो आपके सर के एनर्जी पॉइंट्स को दबाया जाएगा, पीठ में दर्द होगा तो पीठ के। लेकिन सुजोग में क्या होता है, विच इज एन एडवांस एक्यूप्रेशर, आपके सारे पॉइंट्स आपके हाथ में होते हैं और आपके पैर में होते हैं। तो सु का मतलब होता है हैंड एंड जोग का मतलब होता है फीट। सो इट इज अ हैंड एंड फीट ट्रीटमेंट। वंडरफुल। Imagine any kind of
problem that you have in your body can easily be cured only through your hands and through your feet. So as you are saying कि आपको बैक पेन है, तो आपका बैक पेन क्योर करने के लिए मैं आपके बैक को टच भी नहीं करूंगी. आई विल डू दैट ट्रीटमेंट ओनली थ्रू योर फिंगर्स एंड यू विल बी क्योर्ड. Great. So it मतलब is one therapy which doesn't touch the affected area of your body, so it is very safe. And it is again an energy therapy because here we are activating the energy points which are already existing in your body. great. नीलम जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी मैं आपके बहुत सारे रिट्रीट्स, मेरे को बहुत सीरियसली आई वांटेड टू आस्क यू दैट, ये क्या होता है रिट्रीट में? इज इट घूमना फिरना? इज इट समथिंग स्पिरिचुअल? व्हाट इज दिस ऑल रिट्रीट ऑल? आई थिंक आप अभी भी कुछ करने वाले हैं अगस्त में Yes, भी. our प्लीज new टेल अस retreat, समथिंग. our next retreat is coming up on the 26th, 27th, and 28th of August in Dehradun at Jungle वंडरफुल. Gadera Resort. और उस retreat में हम दो programs कराने वाले हैं. One is the soul healing program, where you will learn how to remove the karmic patterns which are again and again happening in your life. हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है और उसके सेम रिजल्ट्स हमें बार बार मिल रहे होते हैं. ट्रू. तो हाउ टू चेंज दोस कार्मिक पैटर्न. And second program which we are going to do is energetic facelift. That again is an energy therapy where you have the energetic points on your face, and by pressing those points, you can remove all your wrinkles, your blemishes, your dark circles, and you can beautify yourself without any medicine. अब retreat को हम जो बोलते हैं, our retreat are known as wellness retreat. तो obviously इसमें wellness से related sessions तो होंगे ही हो. बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. लाइक वी हैव अ हाफ डे ट्रिप प्लान्ड फॉर द देहरादून सिटी. We will have bonding activities in the night. We will have mauj and masti in the night. So it's a complete package where you disconnect from the outer world and come in connection with your inner self. And at the same time, in these retreats, you make lovely friends. You get to know about each other's journey. और बहुत बार ऐसा होता है जब आप दूसरों के दुख सुनते हो ना तो आपको लगता है आपके दुख कुछ भी नहीं है एंड यू फील ब्लेस्ड वेरी ट्रू, कि वेरी आपके ट्रू. लाइफ में सारी अच्छी चीजें चल रही हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में मानते ही नहीं हो कि आपके पास ब्लेसिंग्स है. सो दैट अवेयरनेस ऑल्सो कम्स. यार आई एम वेरी ब्लेस्ड. मैं क्या अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन कर रही हूँ, मेरी लाइफ तो औरों की लाइफ तो बहुत अच्छी है. तो वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी डेवलप होती है. And we always have some learning in our retreat, so we try to teach them something which they can take away with them and practice it for the rest of their life to make their life. Wonderful. So what are the dates? Please tell us again, and the pricing for the same. 26th, 27th, and 28th of August at Jungle Gadera Resort, Dehradun. So And the if you are price? coming for twin sharing basis, the charges are 17,000 rupees. If you're looking for a single room, it is 19,000 rupees, including your stay, activities, and trip. Transport is not included because everybody has the option either to come by car or by train, whichever way you want to come. Okay, so they can reach on their own, but they need to register with you for the same that they are coming. And इसका बैच साइज कितना रहता है कि इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे? Iska, I'm sorry, just आपके रिट्रीट प्रोग्राम्स का बैच साइज कितना रहता है? लाइक 5, 7, 10, 15, 25? व्हाट्स द बैच साइज? see. So what we try to focus is 10 to 15 people, not beyond that, so we can give them personal attention because हमारे retreat में personal healing sessions भी होते हैं. तो अगर उससे ओके, ज्यादा होंगे तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम सबको cater कर सकें. So we always focus on 10 to 15 people, a small group, but a group which is good to connect with and gets quality time with themselves as well as with us. दैट्स वंडरफुल. तो नीलम जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप ये बताइए कि what all things are there in nature's grace? Because the name suggests itself as nature's grace means nature के lap में everything is there in one, under one roof, or So under what one we, person's guidance, that is Dr. yeah. Neelam Parwani. So So what's it all about? what we do at Nature's Grace is we do certificate courses of Reiki, Sujog, and Switchwords. We do treatments through Reiki, Sujog, and naturopathy. Okay. We do animal healing, that's for the pets as well as for the stray babies. We have our meditation and positivity workshops and programs. We do wellness retreats. Our two USPs are there. One is the Kids Reiki program, where we teach 5 years and above kids
the first level of Reiki, which will help them in developing a positive attitude right from the beginning and also help them in the self healing practices. Because once you start learning how to heal yourself, you don't really have to depend on any kind of medication. True. All right. Second is our animal healing program, which is again very close to my heart because I'm a dog lover and I love animals. So we do healings for the pets as well as for the stray babies for their physical as well as emotional issues. So for any stray baby, we give complimentary healing. For the pets, yes, it's a minimum charge. Okay. Apart from that, we do personal and professional counseling for the mental and emotional issues. So when we talk about mental and emotional issues, post COVID, so this is at a peak. So Yes. what is this mental and emotional issues that you deal in? It be relationship or something personal or studies wise, because बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, definitely their mind is full of trauma. ठीक है, बिकॉज अब जब फिजिकल एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं और जब ऑनलाइन दे रहे थे और जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, इंटायरली डिफरेंट. तो थोड़ा सा Yes. इस पे आई वांट यू टू थ्रो मोर लाइट so that people know कि emotional or these type of issues, how that can be treated by you. First, let's differentiate between emotional and mental issues. Mental Yeah. issues क्या होते हैं और emotional issues क्या होते हैं? Your anxiety, your depression, your agitation, your irritation on small, small things, your unhappiness. These all are related to your emotions. These are your emotional issues, which are situational. अगर डिप्रेशन आपके टू. साथ which are situational. हाँ, ये सो जरूरी नहीं है डिप्रेशन कि टू. yes, depression also has a reason behind it. ऐसे ही कोई भी डिप्रेस नहीं हो सकता. अच्छा खासा इंसान बिना बात के डिप्रेस नहीं होता है. So there is an incident that has happened in their life which have made them go into this depression. So it is situational. और ये situations जैसे ही ठीक होती है आप इन चीजों से निकल आते हो या जैसे ही आपको सही गाइडेंस मिलती है आप इन चीजों से निकलना चालू कर देते हो. If you know what makes you anxious, you know the exact reason of getting anxiety, and if you work on that reason, your anxiety will go away. If you वंडरफुल. know the exact reason why you are depressed and you work on it, your depression will go away. Your irritation, your anger, your agitation, they all are situational. So none of these are permanent. They all can be resolved once the situations change. Now let's talk about the mental issues. Mental issues are something which are going there from years altogether. Those are the patterns which are developed in your behavior. So they have not come in a year and they do not change with situations either. Suppose a person has a habit of overthinking. तो चाहे वो खुश है चाहे वो दुखी है वो ओवरथिंक कर ही कर रहा है हर सिचुएशन. सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द सिचुएशन. अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट आ रहा है तभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और अगर आपके लाइफ में कोई बुरा मोमेंट आ रहा है तो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि ये आपका बिहेवियर है ये आपकी हैबिट है. तो दिस इज अ मेंटल इशू. दूसरा मेंटल इशू है शक करना. जैसे किसी इंसान को शक करने की आदत है. अब जरूरी नहीं है कि वो शख्स सिर्फ वो घर वालों पे करेगा. अगर उसकी आदत है तो वो बाहर वालों पे भी शक करेगा घर वालों पे भी शक करेगा मेड पे भी शक करेगा और एक सीनियर लीडर अपने ऑफिस में अगर है तो उस पे भी शक करेगा. दैट इज अ मेंटल इशू बिकॉज इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पीपल और सिचुएशन. दैट्स द हैबिट यू हैव डेवलप्ड. मेंटल इश्यूज को डील करने का तरीका बहुत अलग होता है. इनफैक्ट इमोशनल इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं. मेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको अपनी आदतें अपनी बिहेवियर चेंज करना पड़ता है बिकॉज मेंटल इश्यूज आर जस्ट लाइक एडिक्शन. आपका सिगरेट का आई अल्कोहल नो. का जो एडिक्शन होता है दैट इज बाय चॉइस. नोबडी फोर्सेस यू टू स्टार्ट स्मोकिंग राइट. यू डू इट बाय चॉइस and then it becomes addiction. The same ways these thought processes, these patterns that you are following is by your own choice. Nobody pushed you into that. So that's the difference between mental and emotional issues. जो बच्चों के साथ अभी हो रहा है कि पहले ऑफलाइन क्लासेस अब ऑनलाइन क्लासेस 2 साल तक स्कूल नहीं थे अब स्कूल है. दीज ऑल आर इमोशनल इश्यूज. वंस दे गेट इनटू द राइट रूटीन अगले 3-4 महीने अगर वो रेगुलरली स्कूल जाएंगे ये इश्यूज बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे. उनको वो एंग्जाइटी इसलिए हुई क्योंकि जब वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी हम सबको पता है उन लोगों ने कैसे एग्जाम्स दिए मी थे टू. राइट. वेरी ट्रू.
सो दे एंजॉयड दैट लग्जरी। उनको हमने एक बहुत ही कंफर्ट वाली जोन दे दी थी। पूरा पूरा दिन वो बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, रूम के दरवाजे बंद है, हमें ये भी नहीं पता वो क्लास अटेंड कर रहे हैं या वो मूवी देख रहे हैं, यू नो। उनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गई उनको बहुत जल्दी, एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम। अब जब वापस नॉर्मल रूटीन चालू हो गया है, वापस स्कूल जाना है, वापस फिजिकल एग्जाम्स देने, तो पहले 1 या 2 बार में उनको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, but it will eventually go away because that's the actual pattern which they had been following from years altogether. So they will come back to the normal routine very soon. Great. So I think people now you know what is emotional and what is actually mental issues, because mere liye depression was a mental problem. So now Exactly. I'm getting to know that it's an emotional thing that people can overcome it. But the best way is she know how to treat it. And should I say something, Dr. Neelam Parwani, I've taken so Sure. many interviews और इट्स ऑल अबाउट यू पे बहुत कुछ हमने डिप्रेशन और पैनिक अटैक के बारे में बात भी की है. बट जो सब्जेक्ट नॉलेज आपको है, जो सब्जेक्ट नॉलेज, इट्स नॉट दैट यू आर ऑन माय प्लेटफॉर्म एंड आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू समथिंग लाइक दैट, but the way beautifully you have explained and the difference you have told me, and I think you should come up with these type of lives for people, that will Sure. really change the scenario. Because seriously लोग इसी डिलाइमा में रहते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ना मेंटल प्रॉब्लम्स है, बंदे को तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ. बट यू हैव रियली डेल्ट विद इट सो, मतलब सो प्योरली दैट दिस इज एन इमोशनल प्रॉब्लम, और इमोशनली ये सॉल्व होगी, ना कि डॉक्टर हेल्प कर पाएगा. तो दैट्स रियली वंडरफुल. अब एक बहुत ही Thank you. डिफरेंट ऑल टुगेदर एकदम से मेरे दिमाग में आया और मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए. आपको गुस्सा आता है हाँ, बिल्कुल आता तो है। आप क्या करते हैं? अपने गुस्से को रिलीज करना सीखा है मैंने। तो गुस्सा हम सबको आता है, एंड वी आर नॉट सपोज टू सप्रेस एनी इमोशन। जैसे ही आपने अपना कोई भी इमोशन सप्रेस करना चालू कर दिया, वो आपकी फिजिकल बॉडी को हार्म करे। अब गुस्से को रिलीज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक तो होता है आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपने जाके उस पर बोल दिया, एंड यू स्पॉइल दैट रिलेशनशिप, यू स्पॉइल दैट सिचुएशन। ट्रू. दूसरा होता है गुस्से की जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ एंगर इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, द मोस्ट नेगेटिव एंड द मोस्ट पावरफुल। तभी तो हम कहते हैं ना, गुस्से में इंसान किसी का खून भी कर सकता है, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं करे। अगर वो एनर्जी इतनी पावरफुल है और इतनी नेगेटिव है, और अगर हम उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, तो हम उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते रियली. हैं। यस। सो व्हाट वी टीच इन रेकी इज हाउ टू यूज योर एंगर इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। एनर्जी तो उस वक्त है आपके पास इतनी सारी कि आप मतलब अगर 10 सीढ़ियां चढ़ने में आपको तकलीफ होती है, उस वक्त मैं आपको बोलूँ ना 3 फ्लोर नीचे उतर जाओ, आप गुस्से में वो 3 फ्लोर नीचे उतर जाओगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपने 3 फ्लोर नीचे उतारी। वंडरफुल. तो उस एनर्जी को यूज कीजिए एक फिजिकल एक्टिविटी। The moment you start using that energy in physical activity, firstly, you're burning your calories. Secondly, this energy is getting dissipated very fast. तो जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो लोग बोलते हैं ना जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो उस सिचुएशन से हट जाओ, दैट्स द फर्स्ट रूल। उस सिचुएशन से हट जाओ। सेकंड, टेक 10 minutes and sit somewhere, just calm your emotions down. और थर्ड, उसके बाद स्टार्ट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट 10 minutes, चाहे वो सीढ़ी चलना, सीढ़ी उतरना हो, साइकिलिंग करना हो, डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन एंड वेयर यू आर। इफ यू आर स्टेइंग इन अ ऑफिस, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एवरी कॉर्पोरेट ऑफिस हैज स्टेयर्स। 3 बार सीढ़ियां उतर चढ़ लो। 3 बार सीढ़ियां उतरने चढ़ने के बाद चौथी बारी में आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी कि आप वो नेगेटिव इमोशंस निकाल सको, क्योंकि वो निकल गए। उस 15 मिनट की एक्टिविटी में आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई। यू हैव काम योर माइंड डाउन, नाउ गो एंड फेस दैट सिचुएशन वंस अगेन विद अ काम माइंड एंड से व्हाट यू हैव टू से। क्योंकि गुस्से को हमें दबाना नहीं है, एक उसके साथ साथ हमें उस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। उस सिचुएशन को टैकल करो, गो बैक, but only when you have a calm mind, so that you can say what you have to say in a much better way. There's no guarantee आपको दोबारा आप जाके बोलोगे तो वो इंसान आपकी बात मान लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग से तो वो बात निकल गई ना, क्योंकि हमें गुस्सा आता है, और अगर जब तक हमारे दिमाग में जो है हम वो सामने वाले को नहीं बोलते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो क्या हो रहा होता है, वो नेगेटिव एनर्जी बार बार जनरेट हो रही है, बार बार जनरेट हो रही है, बार बार जनरेट हो रही है। एक बार आपने जाके वो बात बोल दी तो वो एनर्जी वहीं खत्म हो गई। हमारे दिमाग में वो चैप्टर क्लोज होना चाहिए।
समथिंग बिकॉज मैं अनइंटेंशनली करती थी. जब मुझे पहले गुस्सा आता था तो सिचुएशन 5 साल पहले दूसरी थी. 5 years आई टुक टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. और अभी जब गुस्सा आता है तो आई गो इन किचन एंड आई स्टार्ट कुकिंग. तो हाँ, बच्चे बोलते हैं आप गुस्से में ही रहा करो बिकॉज एवरी एवरी टाइम यू मेक समथिंग वेरी न्यू. So बहुत अच्छा बनेगा unintentionally, उस वक्त या I know unintentionally I was doing it, but I think that is only a thing कि अभी reactions कम आते हैं. I listen, I तो समझोफाई and बेसिकली then, हाँ, आपने उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चालू कर दिया ना, but वही ना बस वही करना होता है। unintentionally. शायद आप मुझे आज से 6-7 साल पहले मिले होते और तब की प्रीति को जब आपने देखा होता तो आप बोलते तू सबसे पहले आ जा, तेरे को सबसे पहले मैं सिखाऊं कि करना कैसे. बिकॉज आई वॉज रियली अ टफ नट टू बी क्रैक at that हम्म, point of time. But Neelam ji, should I say something again? हाँ जी, Because I've been working closely with many healers. No हम्म, offense to any healer, I've been closely working. But the way you are telling about energy, you are talking about healings, they are entirely different. Can I ask you how come? that's why I told you ना, it took me 1 year to learn that modality. But जब how आप beautiful. 1 साल तक किसी चीज को इतना डीपली सीखते हो, आई वॉज अ हार्ड नट टू कम इन टू स्पिरिचुअलिटी. मैं तो मतलब झंडे गाड़ के बैठी थी, ठीक है, मैंने उसको एक तरीके से चैलेंज लिया था, ये वर्क नहीं करेगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी ये वर्क नहीं करेगा. और मेरी टीचर बोलती थी ये वर्क करेगा, मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगी ये वर्क करेगा. Wonderful. तो आज भी वो बोलती है तुझसे ज्यादा मतलब एरोगेंट, स्टबर्न, चीजों को नहीं मानने वाला कोई और नहीं था. बट व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई मूव्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, एज आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, I don't have any blind faith or anything. I started experimenting on my own with the energy. जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो किसी चीज का और रिजल्ट मिलता है, तब आपका फेथ उस पर बहुत जल्दी बिल्डअप होता है. तो मैं छोटी छोटी चीजों में रेकी की एनर्जी को यूज करती थी. विल नॉट बिलीव द फर्स्ट रेकी प्रेयर विच आई डिड. लोग अपने पैसों के लिए, लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए करते हैं. मेरी पहली रेकी प्रेयर थी कि मेरी मेड रोज सुबह को टाइम पे घर आए. मेरी प्रेयर Wonderful, wonderful. because always remember Preeti, the big problems are only 2 or 3 in our life. But if these small things get sorted in our life becomes really easy. मेरी सेकंड प्रेयर थी कि जब भी मैं जाऊं मुझे हर सिग्नल लाइट पे ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए. मेरी थर्ड थी जब मैं हाईवे पे जा रही थी एंड देयर वाज नो पेट्रोल इन माय कार, नो, इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी और वो डेस्टिनेशन ही नहीं आ रहा था जहाँ मुझे जाना है. मैंने प्रेयर की कि या तो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ या मुझे पेट्रोल पंप दो, क्योंकि मैं इसी गाड़ी में जाने वाली हूँ. And within 5 minutes, I don't know, from nowhere, I could see a petrol pump there. तो जब आप ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हो और ये पूरी होती हैं, तो then when you move forward and start praying for health, for money, for job, or for anything else, you have already achieved that thing in your life. So that's the reason I believe in energy and I know how it works because I've experimented a lot. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मेरे फेथ पे मत चलो, अपना एक्सपेरिमेंट करो. कोई जरूरी नहीं है जो चीज मेरे लिए वर्क की है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगी, राइट? देखो पहले वर्क करती है या नहीं, उसके बाद बोलो कि हाँ रेकी वर्क करती है. हाँ, जब तक वो वर्क नहीं करती है तुम्हारे लिए, तब तक तुम मेरे साथ हाथ पकड़ो, मेरे फेथ पे चलो. बट इवेंचुअली यू हैव टू वॉक योर ओन पाथ. So it has to be your life and your experiments with you. Wonderful. Beautifully explained. In fact, you know what? I'm getting goosebumps because I think I'm talking to a magician. मैंने ये प्रे किया और ये हो गया, मैंने ये बोला और ये हो गया. Because I एक्चुअली ये होता है. and I'm very different. लॉजिक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. तो मेरे तो ये लिए भी लॉजिक ही तो है. हाँ मैं वही बोल रही हूँ. बट एक प्रेयर में इतनी शक्ति की ग्रीन लाइट्स. एंड आई ट्रूली बिलीव बिकॉज सी, रेकी. आपकी प्रेयर आपके थॉट से रिलेटेड आई होती है. नो. आई अगर एग्री. आपने प्रेयर की और उस पे आपका फेथ नहीं है तो वो प्रेयर पूरी नहीं होगी. वेरी. लेकिन अगर आपने प्रेयर की और उस पे आपका फेथ है तो वो पूरी होगी, बिकॉज सबकॉन्शियसली यू बिलीव दैट इट इज गोइंग टू हैपन. अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में मेड आती है, हाँ हाँ. झाड़ू पोछा बर्तन करती है. अब आपके घर में कोई नई मेड आई तो आप एक दिन उसको बताओगे कि ऐसे बर्तन करना है, ऐसे झाड़ू करना है, ऐसे पोछा करना है, राइट? उसके बाद वो रोज आती है तो आप उसके सामने सर पे जाके खड़े होके देखते हो कि ये कैसे बर्तन कर रही है, कैसे बहुत झाड़ू टाइम. कर. नहीं. आप यू बिलीव कि अब मैंने इसको बता दिया, अब ये ऐसे ही करेगी, राइट? You develop a faith on a maid
then why can't you develop a faith on a universal energy? वहां पे भी तो हम बोल रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट करो, करके देखो, अगर वो हो रहा है तो फिर फेथ डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपका ये जो रेकी कोर्सेज हैं, दे आर ऑनलाइन और ऑफलाइन? बोथ, दे आर बोथ. ऑनलाइन ऑल्सो, और अब तो ऑफलाइन चालू हो गया है बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज मच बेटर. And बट यू what is कैन. the duration like? So the first step of Reiki is a 5-day course with 1 hour class daily. And the first step is all about self-healing. So we work on you, your blocks, your fears, your phobias, and your desires in the first. 5 days में आ जाएगी रेकी? लोग एक दिन Please. में रेकी सिखाते हैं, 2 क्या घंटे में बात रेकी है, सिखाते क्या हैं, मैं तो बात फिर है. भी 5 दिन ले रही हूँ. 5 दिन में मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन वो आपके लाइफ में वर्क तब करेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करो. I agree. I truly believe in राइट. that because मेरे फादर इन तो लॉ ने अगर बहुत कोशिश की थी रेकी सिखाने की, बट मैं सीख ही नहीं पाई. मैं बोलती थी आप ही कर दो यार, पता नहीं आप डॉक्टर हो, आप ही कर दो, तो शायद एग्जैक्टली. मेरा वो टाइम आने वाला है या आ रहा है. बिकॉज आज फर्स्ट टाइम मुझे किसी हीलर से, किसी रेकी स्पेशलिस्ट से बात करके एक्चुअली अच्छा लग रहा है. So what we do is when we teach a student Reiki, we don't leave him after 5 days. I ओके. have a support group, where WhatsApp group where the person is a part of it. After that, every time in the initial stages when you have just learned, you are in any kind of trouble, you need any kind of assistance, you just need to put your thing in the group and all the other members will give Reiki to you. अरे क्योंकि वाह. शुरू शुरू में आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं करना, या मेरे से नहीं होगा, या पता नहीं मुझसे जो होगा वो मेरी टीचर कर सकती है, मुझसे होगा या नहीं होगा. कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज के. Every month we have a group Reiki session, which is an online session for students from all over the world, wherever they are sitting right now. They connect. We do a 1 hour group healing prayers for everybody. अगर आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना है तो उसके साथ टच में रहना बहुत जरूरी है. तो हम उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम देते हैं. जैसे कोविड में देयर वर सो मेनी मेंबर्स ऑफ माय ग्रुप हु हैड चैलेंजेस, किसी के फैमिली में कोई बीमार है, किसी के रिलेटिव्स में कोई बीमार है. और जब आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू गिव वेरी हीलिंग टू देम. वेरी वेरी. यू हैव अदर प्रॉब्लम्स, उनका मेडिकल देखो, ऑक्सीजन देखो, ये देखो. So what you need to do is just put a request in the Reiki group and all the other students will pray for and वाओ. give healing to that person for you. और अगर आपने ये कर लिया और आपके वो जो भी हैं ठीक हो गए, तो नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आती है किसी और के लिए, आप दिल से उसके लिए प्रेयर करना चालू करो. तो यू डेवलप अ हैबिट ऑफ प्रेइंग, वंडरफुल. डेवलप अ हैबिट ऑफ बिलीविंग इन एनर्जी, क्योंकि आपने देख लिया ऐसे करते हुए. So people, if you are looking something really magical and phenomenal, then I would suggest please connect with Dr. Neelam Parwani because she has one-stop solution for whether you have a mental issues or whether you have emotional issues, whether you want to heal yourself or heal the people around you, or whether you want to transform your anger energy into a very, very positive energy, which I've learned from her. And then she's one stop. And above all, and the last thing, but the not the least, if you have not registered or if you want to know more about the retreat programs, then definitely in my YouTube link, I will be putting her all the details. Neelamji, can I share your number and all? Yes, please go ahead and Okay, share my number. Go ahead and share the dates of the retreat. I can even share the creative for the retreat. You can put that also, so people that will know more. that's great. So I'll definitely putting forward the same in my Facebook circle. I'll be circulating the same in my friend circle. So anybody who's interested in this 3 days retreat that is happening on 26th, 27th, and 28th, do connect with Dr. Neelam Parwani. And trust me, I can vouch for her because I've met her personally 2 to 3 times, and the talks that we do, the intentions that we share, and the smile that we share is really, really different. So that's why it's all about you is a group that is only for you. So come forward and talk to Dr. Neelam Parwani. Be it anything, she'll guide you in a proper manner and take you to the next level. That's my assurance to you. And अभी आपने सुन ही लिया होगा, आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ग्रुप पे डालो. ये फेसबुक लाइव जाना था इंटरव्यू में, जान पूछ के नहीं लेके गई बिकॉज आई वांटेड टू बिकॉज फेसबुक लाइव में क्या होगा, वो तुरंत चला जाएगा.
तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं इसमें ऐड करना चाहती थी, that will only happen through YouTube channel. So you will be I'll be sharing a link soon with you, Dr. Neelam Parwani, in a day's Sure. time, and we will be circulating the same in our group also and other groups too. Yeah, let me थोड़ा सा also जाते know. I will also circulate in my group. definitely, और थोड़ा सा जाते जाते, I want you to tell more about your group. Okay, so I have a holistic healing group by the name of Nature's Great Miracles of Holistic Healing, where we promote holistic healing, nutrition, and natural products. So, all that which is related to wellness and good health. When I was teaching Reiki and Sujok, I realized there are so many modalities in this world. मैं तो 2 या 3 ही सिखा सकती हूँ, बाकियों का क्या? So I thought of having a platform where we can have different healers from pan India, showing different modalities, practicing different things, and you have an access to all those healers. Because for me, spirituality is something which you connect with. तो अगर आप रेकी से कनेक्ट होते हैं तो मैं हूँ, अगर आप थीटा हीलिंग से कनेक्ट होते हैं तो कोई और है, अगर आप नेचुरोपैथी से कनेक्ट होते हैं तो कोई और है. जिस भी मोडालिटी से आप कनेक्ट होते हैं, please go ahead and get connected through our panel experts through those modalities and create wellness and happiness and abundance in your life. And that's the whole motto of that group. Thank you so much. So, guys, if you really are looking forward for a spiritual group, a group that is specially based for healers, a group that will help you to grow, then I would suggest you please go and be a part of this group. Because कुछ groups ऐसे हैं जिनको join करने से फायदा ही होगा. फायदा in the sense monetary ना भी हो, but spirituality से connect करना, चीजों से कनेक्ट करना, लाइक रेकी, नई नई चीजों को सीखना, आपके एंगर पे काम करना, एंड यू नो दीज थिंग्स दैट द वर्ल्ड नीड्स. So please go ahead and join the group and you can get in touch with Dr. Neelam Parwani. Dr. Neelam Parwani, thank you so much for taking out time and coming on the show, O Thank you Zindagi so Talk much, Show. Preeti. It's a And lovely way to connect with you, and it is a lovely platform. I'm very glad to be a part of this platform. same here, because season 2 starting with such a positive note with Dr. Neelam Parwani, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था. थैंक यू Thank सो you so मच. much. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू टोल्ड, मैंने कहा सीजन 2 ही हम आपसे शुरू करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल विल जॉइन इन. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर टाइम, डॉक्टर. Thanks a lot. बाय Have a good बाय. day and stay blessed. Bye bye. थैंक यू सो मच. बाय बाय.